हेलो एवरीवन मु रंजीत ओपीएससी एसओ जनरल अवेयरनेस सिलेबस अनुसार ई गवर्नेंस रो किछिटा बेसिक एमसीक्यूज नै कि आसीची एई वीडियो रे ता पूर्व आमे जानिबा दरकार व्हाट इज ई गवर्नेंस। बहुत सिंपल सेंटेंस से जगह यूज करा जाईची। व्हाट इज ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस होची इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस is generally understood as the use of information and communication technology ICT, use of ICT at all the levels of government। ए जगह all the levels of government माने nationally, state level ले, locally, in order to provide services to the citizens, interaction with business enterprises, communication and exchange of information between different agencies of the government in a speedy, convenient, efficient एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। आई होप आप बुझी थे। बहुत सिंपल वर्ड्स यूज करा जगह मु टेलीग्राम रे बहुत आगु गोटे जनरल डेफिनेशन कही व्हाट इज ई गवर्नेंस। जो प्रोसेस रोची जेमिति कि गवर्नमेंट टू सिटीजन जो प्रोसेस रोची ताकू ईज करिबा, ताकू आहुरी कन्वीनियंट करिबा, सेथिरे ट्रांसपेरेंसी आनिबा, अकाउंटेबिलिटी आनिबा, एई सब को आमे कंबाइनली कहि परिबा ई गवर्नेंस। एई सब को आमे कहि परिबा ई गवर्नेंस, बट सेथिरे आमे यूज करिकी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जदि आईसीटी को मु बाहर कर देबी देन सेटा को आमे केवल कहबा गुड गवर्नेंस। ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस कोन बुझी हला? नेक्स्ट एबे हमें देखिबा केते प्रकार ई गवर्नेंस अछि। जदि टाइप्स रे मु देखिबी जी टू जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जी टू सी गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, जी टू बी गवर्नमेंट टू बिजनेस, जी टू ई गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। जदि उदाहरण देबी जी टू सी कोन गवर्नमेंट टू सिटीजन, आपण गोटे प्लेटफॉर्म ना सुनी थिबे पढ़ी थिबे माई जीओवी, एटा गोटे प्लेटफॉर्म। आहुरी सुनी थिबे डिजी लॉकर, सुनी छंती ना नहीं? एई सबु हला गोटे गोटे इनिशिएटिव अंडर ई गवर्नेंस। एनएसपी, एनएसपी कोन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ई क्रांति 1970 पाखापाखी स्टार्ट हलानी ई गवर्नेंस। बुझी होची? तो एट द एंड आमे कहि परिबा ई गवर्नेंस माने टू एंगेज, एनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन्स। क्लियर? यार किछटा गोल्स अछि गवर्नेंस रे, जेमिति कि बेटर सर्विस डिलीवरी टू द सिटीजन्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एम्पावरिंग पीपल थ्रू इंफॉर्मेशन, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी विद इन गवर्नमेंट, इंप्रूव्ड इंटरफेरेंस विथ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। क्लियर? एबे हमें किछटा बेसिक क्वेश्चंस देखिबा फर्स्ट वीडियो रे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस इन फाइनेंस? फाइनेंस फील्ड रे ई गवर्नेंस रो गोटे एग्जांपल दियंतु। ऑप्शन गुडी जदी आपण देखिबे करेक्ट आंसर कोन हबो? ऑनलाइन बैंकिंग। क्लियर? What is the purpose of e-governance citizen identification system? Purpose of e-governance citizen identification system. Purpose कौन थारा? To provide unique identification for citizens, facilitating access to government services and entitlements. जेमति कि हमें आधार गोटे कहबा। ठीक अछि? Which of the following is an example of e-governance in environment management? ऑप्शन गुडी को जदी देखिबे बाकी ऑप्शन गुडी को irrelevant अछि। तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को आमे कहबा गोटे एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट फील्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस इन लॉ एनफोर्समेंट? लॉ एनफोर्समेंट रे बाकी ऑप्शन गुडी को देखंतु ए सब इरिलेवेंट अछि। आंसर कोन हबो? क्राइम मैपिंग सिस्टम। क्राइम मैपिंग सिस्टम जोथरे की डाटा भी यूज होची। क्लियर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूज होची माने ए जगह रे जते भी इंडिविजुअल्स अछंती समस्त संगर डाटा अछि गवर्नमेंट पाखरे, हाँ ना नहीं? तो किसी भी लॉ इम्प्लीमेंटेशन रे हो जहाँ भी हो से सब रे काम रे आसीबो ई डाटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस इन सोशल वेलफेयर? सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। व्हाट डज ई गवर्नेंस स्टैंड फॉर? देखो अगेन कहया पई चाहू छी बहुत बेसिक क्वेश्चन से सब। व्हाट डज ई गवर्नेंस स्टैंड फॉर? एवेटिकेशन पूर्व आमे पढ़ले इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। बाय द वे ए क्वेश्चन सब डिफिकल्ट केमिति हबो? ए क्वेश्चन सब डिफिकल्ट केमिति हबो? डिफिकल्ट केमिति हबो जदी से पचार देला माई जीओवी विषय रे।
डिजी लॉकर विषय किसी स्टेटमेंट देदेला से किसी ऑप्शन माने क्वेश्चन रे ई गवर्नेंस बोली लिखा जाय नथिबो जेमति सब क्वेश्चन रे लिखा जायछि सेथरे एमति किसी लिखा जाय नथिबो डायरेक्ट डिजी लॉकर ऊपर तीनटा चारिटा स्टेटमेंट देथिबो यादरो कोडा ठीक कोडा भूल बुझी होछि गवर्नमेंट द्वारा निया जाउथबा इनिशिएटिव अंडर ई गवर्नेंस से सब आपन को देखिया पड़ियो जेटा कि करंट अफेयर रे मध्य अछि नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is an example of e-governance in agriculture obviously weather forecasting which of the following is not a benefit of e-governance या भितर कोटा benefit नुह e-governance रा greater efficiency and effectiveness in service delivery benefit improved access to government services benefit enhanced transparency and accountability benefit increased bureaucratic hurdles ये benefit नुह which of the following is an example of e-governance in public safety public safety रे जदि आमे देखिबा emergency response system public safety रे ठीक अछि which of the following is an example of an e-governance application या भितर कोटा e-governance application e-voting system what is primary goal of देखो क्वेश्चन पढ़ी मु आंसर संगे संगे कहूची जेतेबेले मु स्क्रॉल करूची आपण वीडियो को पॉज करके निजे भी क्वेश्चन पढ़ी परिबे आंसर कोन हो डिसाइड करिवे देन प्ले करिवे ठीक अछि what is primary goal of e-governance to limit access to government services to increase bureaucracy to centralize government control to enhance citizen engagement and service delivery हां ना बहुत बुझी पारुथबे आराम से आपण मु भाबुची आराम बहुत इजीली बुझी पारुथबे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन डाटा इनिशिएटिव इन ई-गवर्नेंस ओपन डाटा इनिशिएटिव इन ई-गवर्नेंस to promote transparency and accountability by making government data freely available to the public. What is the role of digital signature in e-governance? Digital signature role kana to authenticate the identity of users and ensure the integrity of electronic documents, to ensure handwritten signature on digital documents, to prevent access to government website, to provide encryption for sensitive government data. Obviously answer will be option A, to authenticate the identity of users and ensure the integrity of electronic documents. Which of the following is an example of e-governance in education? Obviously e-learning platform होची example of e-governance in education field ए जगह NMEICT यार फुल फॉर्म आपण माने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जणेबे दिस इज ए पार्ट ऑफ ई-गवर्नेंस यार फुल फॉर्म कमेंट कले चलिबो न कले भी चलिबो बट आपण थरे देखि नियंतु यार फुल फॉर्म एक्रोनिम किंबा फुल फॉर्म व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन ई-गवर्नेंस सोशल मीडिया रो रोल कोन ई-गवर्नेंस रे to restrict access to government services, to limit citizen participation in government affairs, to promote transparency and citizen engagement by facilitating communication between government and citizens. Obviously option C appropriate option. What is the purpose of e-governance legal frameworks? What is the purpose of e-governance legal frameworks? To provide a legal basis and a framework for e-governance initiative, regulation and policies, to promote anonymity among citizens, to restrict access to government services. Answer will be to provide a legal basis and a framework for e-governance initiative, regulation and policies. Which of the following is an example of e-governance in cultural heritage preservation? Which of the following is an example of e-governance in cultural heritage preservation? Obviously digital archives and museums option रो ही जणा पड़ी जाउची which of the following is an example of e-governance in disaster management कथा कहला then answer will be emergent alert system which of the following is an example of e-governance in disaster response option गुडी को मध्य रो कोटा which of the following is an example of e-governance in disaster response emergency management system obviously ठीक अछि
व्हाट इज द पर्पज ऑफ मोबाइल गवर्नेंस मोबाइल गवर्नेंस कोड आसिला ई गवर्नेंस आमे सेते पढुचे ई गवर्नेंस रो गोटे सब डोमेन काइंड ऑफ कहि परिबा गोटे पार्ट होची कोन एम गवर्नेंस बुझियला गुड गवर्नेंस सबुठ ऊपर रहइबो ऑब्वियसली ए गुड गवर्नेंस को आउरी बेटर करिया पई तो ई गवर्नेंस आसिला हो ना नहीं तापरे ई गवर्नेंस रो गोटे पार्ट होची एम गवर्नेंस मोबाइल गवर्नेंस टू प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू मोबाइल डिवाइसेस क्लियर ठीक अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस ऑप्शन गुड मध्यरु इज और आर कोटा ई गवर्नेंस अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट ऑनलाइन सेंडिंग ईमेल टू योर स्कूल फ्रेंड बाइंग बुक्स ऑनलाइन एनक्वायरिंग अबाउट प्रोडक्ट या भितर जदि आमे देखिबा एप्रोप्रिएट आंसर विल बी अप्लाइंग फॉर पासपोर्ट ऑनलाइन आ जाई कि सेठी अप्लाई करिया को पड़िबोनी ठीक अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल पेमेंट एप्लिकेशन इज डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो ऑप्शन गुड भितर आंसर हम भीम भीम रो फुल फॉर्म कौन भारत इंटरफेस भारत इंटरफेस फॉर मनी which is or are the levels of governance starting video starting रू कही all of the above हबो यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे आ गोटे क्वेश्चन दो जे आपण माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट करके जणेबे इंडिया रे नेशनल गुड गवर्नेंस डे केबे ऑब्जर्व करा जाए नेशनल गुड गवर्नेंस डे केबे ऑब्जर्व करा जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जणेबे वीडियो केमती लागिला कोन लागिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जणेबे बहुत बेसिक वीडियो थिला आई होप आपन को पई किछिटा फ्रूटफुल निश्चित हेइथिबो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल